Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, in today's episode, we are going to dive into a topic that's both critical and eye opening. And this is about the 2024 Global Hunger Index, GHI, and why India's ranking has sparked concern across the world. So, what does the Global Hunger Index 2024 state about India? That is what we are going to learn today. Students, this year, India ranks 105 out of 127 countries. What does this mean? And why is it so important for us to understand? Let's break it down in a way that's easy for all of us to grasp. First of all, students, the Global Hunger Index. What is it? It's you can say it's a tool used by experts to measure hunger around the world. And it doesn't just focus on whether people have enough food to eat, but it also looks at other factors like child malnutrition and child mortality. And this year, India's Global Hunger Index, yes, India's Global Hunger Index score is 27.3. And this places India in the serious category. What does that mean in real terms? Well, around 13.7% of India's population is undernourished. Nourishment कम है, undernourished है, and a staggering 35.5% of children under the age of 5 are stunted. Okay, they are stunted. Stunted का मतलब क्या होता है? Child stunting, meaning that they haven't grown properly due to nutrition. अगर एक चाइल्ड की हाइट 20 अगर एक चाइल्ड की हाइट है जितनी होनी चाहिए उसके एज के अकॉर्डिंग, वो नहीं हो पा रही, उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, राइट? तो हम कहेंगे द चाइल्ड इज स्टंटेड, right? On top of that, child mortality rate is currently 2.9%, meaning that nearly 3 out of every 100 children don't make it past their 5th birthday. Now, this is quite saddening, right? And this sounds alarming. So, why is India lagging behind compared to its neighbors? आप इस आर्टिकल में पढ़ोगे कि इंडिया अपने नेबर्स जैसे बांग्लादेश, नेपाल से भी कुछ कुछ फैक्टर्स में पीछे चल रहा है. नाउ, as per this report, Global Hunger Index report, it shows that countries like Bangladesh and Nepal are making progress in reducing hunger, whereas India is struggling. And this is partly due to several complex factors. Number one factor जो है, it is poverty in rural areas remains high. रूरल एरियाज में पॉवर्टी अभी भी ज्यादा है, एंड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड इज स्टिल अ चैलेंज फॉर मेनी फैमिलीज इन इंडिया. अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है कि न्यूट्रिशियस फूड कैसे किया जाए, कैसे उसको एक्सेस किया जाए. सेकेंड, इंडिया हैज one of the highest rates of child malnutrition in the world. इंडिया में जो चाइल्ड मालन्यूट्रिशन रेट है वो सबसे ज्यादा हाई है, एंड ऑब्वियसली इट्स गोना इम्पैक्ट द ओवरऑल जीएचआई स्कोर. एंड malnutrition doesn't just affect growth, it also impacts children's ability to learn and their future productivity as adults. See, it's a common thing, it's an obvious thing. जो बच्चे चाइल्डहुड में छोटे पे वीक रहे होंगे फिजिकली, ऑब्वियस सी बात है उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी स्लो होगा. और कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्लो होगा तो फ्यूचर में फिजिकल के साथ साथ उनका मेंटली डेवलपमेंट भी कम होगा, एंड दे विल लैग बिहाइंड, और अपने पेयर्स के मुकाबले उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी. And this isn't just about food shortages, right? It's more than that. How? See,
it's about food quality and healthcare too. For example, even if there's enough food, it might not be nutritious. क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि माल न्यूट्रिशन सिर्फ रूरल एरिया में नहीं कॉन्सेंट्रेटेड है, इवन अर्बन एरियाज में जहां पर फूड अवेलेबिलिटी है वहां पर भी माल न्यूट्रिशमेंट है। माल न्यूट्रिशन सिर्फ एक फूड की अवेलेबिलिटी तक ही लिमिटेड नहीं है, इट्स अबाउट क्वालिटी फूड, एक्सेस टू क्वालिटी फूड। कई बार ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, दे आर बिंजिंग ऑन जंक फूड, and they're not going to get nutrients out of those kind of food, right? And we have also seen that the access to healthcare, especially for mothers and children, it's limited in many areas, and this also contributes to child stunting and mortality. And these factors, it makes hunger a complicated issue that requires multifaceted solution, राइट? अब यहाँ पर भी अगर आप इस आर्टिकल में देखोगे कि इंडिया ने, ऑल्दो इंडिया का जो स्कोर है काफ़ी सारे फैक्टर्स में इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड, बट इंडियाज some of the initiative that government has brought, like National Food Security Act, Poshan Abhiyan, PM Garib Kalyan Yojana, and National Mission for Natural Farming, it shows that India has demonstrated significant political will. Okay, that there's a political will, but what we need is, you can say it requires a multifaceted solution, right? And there are several things that experts suggest. इस रिपोर्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है, जैसे कि इंडिया, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग इट्स फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट? इम्प्रूविंग एक्सेस टू प्रोग्राम जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, PMGKAY, Integrated Child Development Services. Okay, so food distribution, it has to be better targeted to reach the most vulnerable people. Second, there should be more programs that focus on maternal and child nutrition. Yes, maternal and child nutrition, क्योंकि अगर मैटरनल हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है चाइल्ड हेल्थ भी नहीं इंप्रूव होगी, राइट? एंड दिस इज क्वाइट एफिशिएंट, this is quite, it's, you can say, need of the hour to, it can be serve as a key to break the cycle of malnutrition, because a malnourished mother will give birth to a malnourished kid. Finally, poverty reduction and improvement in agricultural sector will also play a huge role. Farmer, at present, farmers, they need more support to grow nutritious food and to make farming sector a more reliable source of income. That is also uh, what we needed currently. So it's not just about producing more food, it's also about making sure the right people get the right kind of food. And while there has been progress in some areas, the global hunger index, it makes clear that much more needs to be done if India wants to move out of the serious hunger category. अभी जो इंडिया को स्कोर मिला है उसके हिसाब से इंडिया को सीरियस लेवल पर रखा गया है, सीरियस लेवल ऑफ हंगर इज प्रिविलेंट इन इंडिया, राइट? एंड remember, students, hunger isn't just about numbers, it's also about real lives. So we need to understand the issue first, and that is going to be the first step towards solving it. अगर हमें पता ही नहीं है इशू क्या है तो उसको सॉल्व कैसे किया जा सकेगा? अगर इंडिया में हंगर लेवल सीरियस स्टेज पर है तो रीजन क्या है, इश्यूज क्या है, और कहाँ पर गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? ऑल्सो यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है कि द डेटा दैट वाज कलेक्टेड
फॉर द GHI इंडेक्स, गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेइंग कि वो डेटा कि डेटा भी सही तरह से कलेक्ट नहीं किया गया है। ओके, एंड डेटा के रिगार्डिंग भी, जो नंबर्स हैं उसके रिगार्डिंग भी जो इकट्ठा किया गया था, वो करेक्ट मेथोडोलॉजी अडॉप्ट नहीं की गई है। तो गवर्नमेंट का ये कहना भी है, राइट। बट ओवरऑल जो इशू है उसे हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Alright, students, so thank you for tuning in today's episode. And if you want to learn more about such issues, students, please like, subscribe, and share it to your friends, right? Until next time, stay informed and stay curious.